Yes, dear students, let us continue with anatomy of flowering plants. And now we will discuss the anatomy of the dicot and the monocot, root, stem, and the leaf. What is the purpose? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स एनाटॉमी इन पार्ट्स का? उसका रीजन ये है बच्चों कि ऑलरेडी वी हैव स्टडीड द वास्कुलर बंडल, वी हैव स्टडीड द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. Now, if you want to study the ground tissue system, in order to study the ground tissues, you have to take a transverse section. So ये एक रूट है या एक स्टेम है, उसको हम लोगों ने ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया एंड वी ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. तो इंटरनल स्ट्रक्चर से हमको एनाटॉमी सिखाई दी. विल स्टडी द एनाटॉमी एंड एवरीथिंग अदर देन द एपिडर्मिस एंड द वास्कुलर बंडल कम्स अंडर ग्राउंड टिश्यूज. एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के सारे टिश्यूज को हम कंसिडर करते हैं ग्राउंड टिश्यूज. So let us begin the anatomy of dicot root. So when you cut a dicot root in a transverse section, the outermost layer is called epidermis. So you can see over there, over here, that we have mentioned over here, the epidermis. Now the epidermis in a dicot is also called as the epiblema, also known as the epiblema. Epiblema के भी नाम से you can call it epiblema. And this epiblema is unicellular, it is parenchymatous, and it is made up of unicellular extensions which are called as the root hairs. Okay. Now there are a couple of specialities of the epidermis, which is called epiblema. If you compare it with a stem, the stem ka epidermis is covered by a cuticle, and in a leaf it shows the presence of a stomata. In a root, there is absence of cuticle and absence of stomata. क्योंकि रूट को वाटर एब्जॉर्ब करना है और स्टेम को वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है. तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनके पास वैक्सी क्यूटिकल होता है. ये रूट्स को जरूरत नहीं है. आफ्टर द एपिडर्मिस, which is also called rhizodermis, rhizodermis means the root hairs, the layer with the root hairs. After that, we have a multi-layered cortex. This entire region is the multi-layered cortex. And this multi-layered cortex is made up of parenchymatous cells. These parenchymatous are thin-walled cells. They show the presence of an intercellular space. Okay. Now this cortex is parenchymatous but does not show the presence of chloroplast. So it is going to be non-green. Very few plants where the roots perform photosynthesis, like Tinospora and Trappa. These roots are called photosynthetic roots or assimilatory roots. They show the presence of chloroplast in their cortical cells. It is followed by a single layer which is called as the endodermis. And the endodermis is followed by the pericycle. Pericycle के बाद आएगा vascular bundles which include the xylem and phloem. Okay. And between the xylem and phloem, xylem और phloem के बीच में there is a tissue which is called as the conjunctive tissue. In the case of the roots, the protoxylem is towards the periphery, metaxylem is towards the center. Hence, the condition is called as an exarch condition. In the case of dipot root, it's called exarch condition. Now, here, if you summarize the layers, outermost layer is the outermost layer is the epiblema, followed by the cortex, followed by the innermost layer of the cortex that is called endodermis, followed by the pericycle, followed by the vascular bundles, including the xylem and phloem, and in the center there is going to be a layer which is called pith. So ये जो है सेंटर में जो है वो पिथ है, राइट ना. और जाइलेम और फ्लोएम के बीच में कंजंक्टिव टिश्यू है. तो अगर हम लोग बात करें एंडोडर्मिस की, सो द एंडोडर्मिस जैसे हमने डायग्राम में देखा, इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इनरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, एंड द सेल्स आर बैरल शेप लाइक दिस. नॉट एग्जैक्टली in a 2D will be able to show, but we'll assume that they are barrel shaped.
जैसे हम लोग ने ढोलक देखा है, तो ये जो वॉल्स होती है ढोलक की उसको हम बोलते हैं रेडियल वॉल्स, और ये वाली जो वॉल्स है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल वॉल्स। ओके, so on the radial walls first, then on the tangential walls, there is a deposition of a waxy layer which is called as suberin. Okay, first this layer is deposited. First, this layer is deposited on the radial walls. Okay, and then gradually it gets deposited on the tangential walls, resulting in the formation of a strip which is called as the Casparian strip. And the Casparian strip does not allow the movement of water, except कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके रेडियल वॉल पे सुबेरिन है लेकिन टेंजेंशियल वॉल पे सुबेरिन नहीं है. Such cells are called as passage cells. Such cells are called as passage cell. Okay, because through these passage cells there'll be movement of water. Okay, so here we have shown those passage cell. Okay, so here there is endodermis, which is barrel shaped, and there is Casparian strip. Some cells which are missing that, they are called passage cells. If you see the protoxylem, it is towards the periphery, so it is a exarch condition. एंडोडर्मिस के पैसेज सेल हैं और बाकी सब जगह पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, जिसकी वजह से एंडोडर्मिस रेगुलेट करता है the flow of fluids both inward and outward. It is like a dam. The endodermis is like a dam. Okay, and the passage cell is like the valve of the dam. Okay, which when open, the water will flow in or out like that. Okay, so that is why it is also called as the biological check post. Endodermis is called biological check post, which because it controls the amount and the quality of water that enters inside the xylem. Okay, and all the tissues, as I just mentioned, all the tissues inside the endodermis is called as stele, and the stele consists of the pericycle, the vascular bundles, and the pith. Okay, the pericycle can be few layered, it is thicker, and it is made up of parenchymatous cells. Okay, and from the pericycle, this is the pericycle. From the pericycle arise lateral roots, as you can see here. Okay, and this is called as the endogenous origin of the root. तो रूट का जो ओरिजिन होता है वो एंडोजीनस होता है. वही अगर हम लोग शूट सिस्टम देखेंगे तो ये जो बर्ड्स है वहां से साइड ब्रांचेस आती है, इसलिए जो शूट का ओरिजिन है वो एक्सोजिनस है और रूट का ओरिजिन एंडोजिनस है. Why is the root का origin endogenous? Because the lateral roots arise from the pericycle. So that is called as an endogenous origin. The vascular bundles, they are radial, they are exarch, and they can be either diarch to tetrarch, मतलब 2 से 4 bundle. Okay. And xylem and phloem are separated by thin walled cells, which are called as the parenchymatous cell. That is called the conjunctive tissue. Okay. And this conjunctive tissue will become meristematic, it will form vascular cambium, hence it will result in the formation of secondary growth. तो conjunctive tissue का काम ये है कि it will help the root, dicot root, to show secondary growth. Then in the center there is pith. Dicot root पे pith बहुत ही कम होता है, इन ज्यादा बड़ा नहीं होता. ओके, parenchymatous cells होते हैं pith में, and there they store the food, parenchymatous cells over there. Now, so from this diagram, it is very clear. We have seen कि अलग-अलग layers क्या होते हैं. Okay, तो quickly सबसे बाहर होता है epiblema with the root hair followed by
cortex, endodermis, pericycle, vascular bundles and the pith. और xylem और phloem के बीच के टिश्यू को हम कहते हैं conjunctive tissue. Some differences between a dicot root and a monocot. In a monocot root, students, the number of vascular bundles will be more than six. So that condition is called as a polyarch condition. And the xylem vessels will be somewhat circular, not angular. Well developed pith will be seen, and secondary growth is absent. Okay. So if you see this typical monocot root, तो आपने मार्क किया होगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंडल्स है जाइलेम के और बीच में 8 बंडल्स होंगे फ्लोएम के. तो जो नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स है इट इज मोर देन 6, so it's a polyarch condition. They show the presence of more cortex as well as a larger pith. Okay, rest most of the structures are same between the dicot and the monocot root. Then about the dicot stem. So on the left is a outline diagram. On the other side we have the detailed diagram. And सबसे बाहर वाला जो layer, that is called the epidermis. And this epidermis is single layer. It is parenchymatous. It is protective in nature. And they show the presence of stem hairs, sorry, which are called trichomes. They are called trichomes, which are mostly multicellular. They can be soft or they can be stiff. And in some cases, they are glandular. And the epidermis will be covered by the single layer of cuticle. तो क्यूटिकल होता है. और अगर यंग स्टेम है तो डेफिनेटली उसके पास स्टोमेटा भी होंगे. The second layer is called the cortex, and the cortex is further divided into the collenchyma that forms the hypodermis, the parenchyma that forms the general cortex, and the innermost layer of the cortex is called as the endodermis. All these three layers together is called as the cortex. तो ये highlighted देखिए diagram में, all these three layers together is called as the cortex. So the cortex is made up of or differentiated into three layers: hypodermis, general cortex, and the endodermis. The hypodermis is few layered thick. It is made up of parenchyma cells. It does not show any intercellular space, and it provides mechanical support and flexibility. And it can contain chloroplast. Followed by the general cortex. The general cortex is multi-layered, and main function of the general cortex is to store the food. In some stem, like in the sunflower stem, it can show the presence of a resin duct or an oil duct. Okay, अगर सनफ्लावर स्टेम का अगर देखेंगे टीएस तो वहां पे आपको एक रेजिन डक्ट भी मिलता है. Okay, the pericycle. After the endodermis, we'll have the stele, and here the stele includes the pericycle, vascular bundles, and the pith. The pericycle is a heterogeneous layer क्योंकि इसके पास दोनों टाइप के टिश्यू है, पैरेन्काइमा भी है और स्क्लेरेन्काइमा भी है. And the cell sclerenchyma is in the form of semilunar patches. Continuous नहीं होता, it is in the form of semilunar patches. And these semilunar patches are not clearly visible over here, but कुछ कुछ पार्ट्स में वो होगा, कुछ पार्ट्स में वो नहीं होगा. लाइक अगर हम ऐसे पेरिसाइकिल बनाने की कोशिश करें तो ये स्क्लेरेनकाइमाटस पेरिसाइकिल है और ये पैरेनकाइमाटस पेरिसाइकिल है. ओके, फिर यहाँ पे आपका कैम्बियम
सॉरी, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइगोम आएगा। लेकिन ये देखिए, ये स्क्लेरन कैमेटस, ओके, दिस वन, so it's in the form of semilunar patches. See, half moon like patches. That is what it is called, semilunar patches. Okay. And the vascular bundles, they show a wedge shape, the V-shaped ring-like arrangement. So if you see the vascular bundles over here, this is the wedge shape arrangement that we're talking about. The wedge shape arrangement. Then the vascular bundles are conjoined, collateral and open with an enlarged condition. जैसे रूट में था exarch, यहाँ पे enlarge. Pith is very well developed, made up of parenchymatous cells. एक और फीचर है यहाँ पे कि between the vascular bundles, there's a group of parenchymatous cells which are called as the medullary rays. और ये रेडियल कंडक्शन में हेल्प करेंगे, ऐसे साइडवेज कंडक्शन में. And at the time of secondary growth, it will result in the formation of the interfascicular cambium, followed by the monocot root. The difference between the dicot, followed by the monocot stem. The difference between dicot stem and monocot stem is this hypodermis is going to be sclerenchymatous. और वहां पे हमने देखा था the hypodermis is cholenchymatous. And the ground tissue is undifferentiated. ये जो ground tissue है, इसमें आपको अलग से कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कंजंक्टिव टिश्यू ये सब दिखने वाला नहीं है. ओके. और वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. सो इफ यू सी दीज वास्कुलर बंडल्स, दे आर वेरी मच स्कैटर्ड. पेरीफेरी के जो होते हैं वो छोटे होते हैं और सेंटर की तरफ जो है दे आर कंपैरेटिवली लार्जर. सो द ones in the periphery are comparatively small. Towards the center, they are comparatively larger. Okay. And few more differences. Epidermis do not have shoot hairs. Hypodermis sclerenchymatous, ground tissue not differentiated, vascular bundles is scattered, periphery की तरफ जो है वो periphery की तरफ small है, center की तरफ large है. The vascular bundles are conjoined, collateral and closed. And the vascular bundles are also covered by a sclerenchymatous bundle sheath layer of cells. और normally ये parenchymatous होता है. Okay, so that was about the anatomy of a dicot stem and a dicot. Previously, we saw a dicot root. Now, moving on further, we have anatomy of a leaf. Okay, अब समझो कि एक लीफ है, ये उसका डॉर्सल अडैक्सियल लेयर है, ये उसका वेंट्रल अबैक्सियल लेयर है. अगर आप देख के ही पहचान पाओ कि कौन सा डॉर्सल है और कौन सा वेंट्रल है, तो समझ जाइए कि ये एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, डाइकॉट लीफ है. लेकिन अगर कोई पत्ता इक्वली ग्रीन है, उसका अडैक्सियल और अबैक्सियल सरफेस आप नहीं पहचान सकते, तो समझ जाइए कि ये एक मोनोकॉट लीफ है. तो हम पहले देखते हैं एक डाइकॉट लीफ. और ये जो डाइकॉट लीफ होता है, इट इज गोइंग टू बी अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ. ये लीफ देख के आप पहचान जाओगे कि कौन सा सरफेस डॉर्सल है और कौन सा वेंट्रल है. तो इन अ डाइकॉट लीफ you can differentiate it into three layers: the upper epidermis, lower epidermis, दो epidermis के बीच में mesophyll tissue, and the vascular bundles. Okay, now look at this, guys. So you have an upper epidermis, the adaxial epidermis, okay, and the abaxial epidermis, okay, that is the lower epidermis. Now further, इनके बीच में जो टिश्यू है, इनके बीच में जो टिश्यू है ये वाला, उस टिश्यू को हम कहेंगे मीजोफिल. मीजोफिल
टिश्यू। ओके, और ये सेंटर में जो है यहाँ पे ये है वैस्कुलर बंडल। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया है कि इट इज डिवाइडेड इनटू द एपिडर्मिस, अब अडैक्सियल, अबैक्सियल, the mesophyll tissue, and the vascular bundles. Now, this epidermis, it is a single layer on both the sides, protective in nature. It shows the presence of a cuticle. Okay, और जो अपर सरफेस होगा वहां पे थिकर क्यूटिकल है, क्योंकि वहां पे सनरेज लाइट ज्यादा आएगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए जरा क्यूटिकल थिकर होगा। वेराज जो अब एक्शियल सरफेस है, जो लोअर एपिडर्मिस वाला सरफेस है, जिसको हम कहेंगे डोर्सल सरफेस, वो कंपैरेटिवली जो है वो थिनर क्यूटिकल होगा। मेसोफिल cells contain chloroplast and it is a differentiated mesophil. If you look at this particular diagram, you will see the presence of these tall column-like cells which form the palisade mesophil, and these oval-shaped spherical cells which form the spongy mesophil. So you got two types of mesophil, a palisade mesophil and a spongy mesophil. So mesophil इस केस में कहेंगे हम लोग differentiated है, palisade mesophil and the spongy mesophil. The palisade mesophil is dark green in color. It contains more amount of chloroplasts. Whereas the spongy mesophil is lighter in color because it shows the presence of less number of chloroplasts. Then the vascular bundles. Okay. They're conjoined, collateral, and closed. We know what is conjoined and collateral, and here they're considered to be closed. मतलब इसमें कैम्बियम जो है वो एब्सेंट है। नाउ डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। सो यू विल हैव अ मेन वेन, मिडरिब जिसको कहेंगे, फिर उसके बाद वेन्स आएंगी, और उसके बाद आएंगे वेनिलेट्स। तो मेन वेन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटे आते हैं वेन, और सबसे छोटे डायमीटर के रहेंगे वेनिलेट्स। ओके, सो जो वैस्कुलर बंडल का साइज है इट विल डिफर। द मेन वेन, ऑल द वैस्कुलर बंडल्स आर गोइंग टू बी लार्ज। फिर जैसे जैसे वेन्स और वेनलेट छोटे हो जाएंगे, देयर विल बी रिडक्शन इन द साइज of the vascular bundles. And the vascular bundles are surrounded by bundle sheath cells. They can be parenchymatous, sometimes they can even be collenchyma. Sometimes they also contain chloroplast for photosynthesis. Okay, and दोनों जो ये जो vascular bundles हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये जो cells, ओके, इन cells को कहते हैं bundle sheath extensions. Bundle sheath extensions कहते हैं उसको। Okay, and these bundle sheath extensions में chloroplast is absent. Compare it with a monocot leaf, students. In a monocot leaf, same upper epidermis है, lower epidermis है, but और एक स्ट्राइकिंग फीचर आप देखेंगे कंपैरिजन करके, that in a dicot, stomata are found on the lower epidermis, not on the upper epidermis. So it's a hypostomatic leaf. Whereas monocot may you will find stomata on both the surfaces. So it's an amphistomatic leaf. Okay. And the mesophyll is undifferentiated. देखो mesophyll एक ही टाइप के सेल से बनाया हो, दो अलग अलग लेयर्स नहीं है, बाकी क्यूटिकल वगैरह तो प्रेजेंट है ही। एक और स्पेशलिटी है मोनोकॉट लीफ स्पेशली ग्रासेस में, प्रेजेंस ऑफ कलरलेस लार्ज एम्प्टी सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज द बुलिफॉर्म सेल्स। पीवाईक्यू भी आया हुआ है कि जब फ्लैश, जब वाटर स्ट्रेस आता है, बुलिफॉर्म सेल्स अपना वाटर लूज करते हैं, एंड उसकी वजह से जो लीफ का ब्लेड होता है और रोल होता है, एंड इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। सो इनका रोल वो है टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, सो जब पानी है तो वो लोग एब्जॉर्ब करेंगे पानी को, टर्जिड हो जाएंगे, फुल ऑफ वाटर, एंड जो लीफ है वो एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन फ्लैसिडिटी के टाइम में
लीफ कर्ल हो जाएगी अंदर की तरफ ऐसे, तो जिसकी वजह से मिनिमाइज होगा वाटर लॉस। Vascular bundles, like the dicot, is conjoined, collateral and close. यहाँ पे ध्यान में रखिए प्रोटोजाइलेम is towards the adaxial surface, को पता है अभी what is adaxial surface, and protofluem is towards the abaxial surface। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करिए सब लोग। okay, that the protoxylem is towards adaxial and protofluem is towards the abaxial surface, right? Now, and the vascular bundle is surrounded by bundle sheath cells which are sclerenchymatous, sclerenchymatous। और चूंकि ये पैरेलल वेनेशन दिखाती है, तो मिडरिप के छोड़ के बाकी जो सारी वेन्स है, उनके वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे दे विल बी इक्वल इन साइज। ओके, सिर्फ जो बीच में मिडरिब है वो सबसे थिकेस्ट होगा, तो उसका वैस्कुलर बंडल सबसे बड़ा होगा। बाकी पैरेलल वेरिएशन दिखाने की वजह से बाकी सब वैस्कुलर बंडल्स ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। ओके, so this will help you to quickly revise anatomy of flowering plants. You're also supposed to go through this mind map, and this mind map will help you to compare between the dicot, dicot stem, monocot stem, and the dicot leaf and the monocot leaf.